Okay, so we are going to discuss illustration नहीं question 16. Question 16 start करें तो पहला we'll do page 242 of your book. Come to that page 242. What's there? Rates of TDS. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ TDS rates और ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन सॉल्विंग 'ਚ देख ਲਈ 0% TDS है 10% है उसी चीज का इफेक्ट नेट और ग्रॉस बहुत फर्क आता है एंड आंसर डिपेंड्स अपॉन दैट यस और नो सो इस रीजन ਲਈ योर TDS rate should be perfect ओके सो देखो ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚਾर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ previous year 24-25 and assessment year 25-26 first point is dividend on shares बोलो की पॉइंट गिवन है dividend on shares referred to under section 1150 10% सिंपल अगर ਅਸੀਂ अपने नोट्स ले लिखिए डिविडेंड के पॉइंट आ गए इस डिविडेंड ऑफ ऑन इंडियन कंपनी शेयर्स एंड यूटीआई सारे डिविडेंड के ऊपर रेट इज 10%. नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड्स यूटीआई म्यूचुअल फंड्स दे यूनिट्स ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरेस्ट what are you getting interest TDS rate 10% no issue. Third one is interest on bank, cooperative bank, post office in respect of time deposits including RDs. मतलब सेविंग्स अकाउंट FD RD कोई भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट FD RD किदी किदी बैंक पोस्ट ऑफिस सारे आते आ गए बैंक्स विच कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ गए ना अगेन रेट इज 10% नो दिक्कत बट नाल ब्रैकेट्स के लिखे रुपीज 40,000 and 50,000 in case of a senior citizen. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਦੇਖਦੇ next step interest on securities interest on securities security is the first point government securities TDS 0 we have discussed while doing the practicals. The second one local authority statutory corporation listed securities unlisted securities of company सारे आ गए means interest on securities government securities में छड़ के सारे we can keep it as others सारे च आ गए whether these are from local authorities or statutory corporation or from company के अंदर listed है चाहे unlisted है सब तक कितना 10% last one fifth point की given winnings from lotteries races puzzles then card games then TV game shows सब तक कितना tell me 30%. These are called casual income in a way. But नाल ब्रैकेट के लिए क्या है? If amount of winning exceeds rupees 10,000, if it's greater than 10,000. Any doubt? Clear? Sure? और जेड़ा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स FD RD ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 40,000 and 50,000 in case of senior citizen means ਉਹਦੀ exception ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਹੈ
normal person the if greater than rupees 40,000, then there is TDS, otherwise it's not. And for senior citizen, देखो तुसी FD ਕੀਤੀ suppose करो अगर ਤੁਹਾਡਾ interest goes beyond rupees 40,000 and if your senior citizen ने अगर ਕੀਤੀ है if it goes on beyond 50,000 then only TDS will be deducted. अगर ਤੁਹਾਡਾ interest 40,000 ਦੇ अंदर अंदर है then TDS will not get deducted. Okay? Yes or no? Example लो तुसी FD ਦਾ interest ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ approx कितना माइंड जा सकता 5 नो 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 15% FD माफ करो इट्स 5-6% मैक्सिमम कोई बैंक ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਦੇ ਦੂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊ ਬੈਂਕਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.5 8 ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਮੈਕਸਿਮਮ 7% ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 10 ਲੱਖ ਦੀ FD ਕਰਦੇ 7% is 70,000 TDS ਲੱਗੂਗਾ यस 40 वाले ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ 50 वाले ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ FD छोटी हो गई अगर 6 लाख की हो गई 7% is 42,000 अगर वो सीनियर नहीं है देन लगूगा अगर सीनियर सिटीजन है तो नहीं लगूगा so this is the way okay yes or no so this chart needs to be discussed from page 242 and नीचे लाइन पढ़ो if net interest or interest received or interest after deduction is given then it has to be grossed up grossing up ਅਸੀਂ सीख चुके using the TDS rate yes or no okay next tax free securities ਦੀ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ grossing up now come to page 261 last two columns in the chart the second last is given exempted incomes ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ TDS ਦੇ ਰੇਟਸ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ is it the same yes or no check ਕਰੋ interest on securities issued by local authorities or statutory bodies 10% TDS rate listed debentures of a company 10% unlisted debentures 10% bank interest 10% casual incomes 30% ठीक है ना casual incomes का rate of TDS is 30% and last column की क्या रहे no TDS in which cases last column says no TDS means zero कितने लगना बच्चे ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 10% ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ no TDS ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ so the first point is no TDS if the interest is on government securities then no TDS in case of winning from bettings you have to learn bettings ਦੇ ਉੱਪਰ winning ਤੇ no TDS then next no TDS in case of section 193(5) yes or no remember debentures wala case yes or no the third point is given that interest on any security notified under section 193 then fourth point is interest paid to an individual or HUF in account pay check for an amount not exceeding 5,000 by certain companies if a company pays you interest but that's less than 5,000 no TDS will be deducted then bank interest and FD and RD ਉਹਦੇ ਤੇ interest ਮਿਲਿਆ then 40,000 and 50,000 case we have discussed yes or no means ਆ ਦੇਖੋ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नील आ गया अदर इंटरेस्ट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ if received from companies if interest is received on securities from companies and amount is less than rupees 5,000 less than or equal to 5,000 then no TDS yes or no next one if race winning is up to 10,000 race winning is up to 10,000 race winning ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਵਰ ਹੋਇਆ 10,000 वाला पॉइंट कॉमन चल रहा है फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट
Winnings from lotteries and puzzle amount if up to 10,000 covered, yes or no? Then, in case of card games and games of other sorts, again 10,000. Yes. Then dividend declared. Dividend, the point is in the first point. Dividend declared or received during the previous year, TDS at 10% if the amount of dividend exceeds 5,000. ਇੱਥੇ भी ਕੀ लिखोगे? If exceeding rupees 5,000. Then it's 10%, otherwise no TDS. दोनों चार्ट कंपाइल करके रेडी हो गया अपना पूरा? रेडी yes or no? केड़ा पॉइंट नहीं कवर होया हाले इस चार्ट which we have written? नहीं, जो भी ਆਪਾਂ दोनों पेजेस बुक चो रीड कीते ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ पॉइंट कवर नहीं हो रहा? ये हो गया? नहीं, which we have not written, that I'm asking. दो पेजेस ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਾ पॉइंट पढ़िया ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਚਾर्ट पार्ट नहीं पढ़े? which tax free वाला no crossing up we have discussed, वो ਇੱਥੇ कोई ਚੱਕਰ नहीं, ਹੋਰ बोलो। नहीं, आज हुने एक पॉइंट पढ़िया। No TDS in case of winnings from betting. यदि कोई कंडीशन था गिवन नहीं सी, then it's okay. ठीक है राजा? So this chart needs to be remembered. Okay? ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋट्स ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। Everyone note it down later. ठीक है? Now come to question number 16 we were saying. Illustration 16. Illustration 16. Okay. So Rohit Arora furnishes the following particulars of his income for the financial year 2000. बोलो 2000, 24, 25. Now the first point is dividend from UTI. बिल्कुल normal. Simple. This is gross or net? First thing. Gross है, बाहर तो 10,000 ही जाना। अगर सानू gross net दोनों चाहिए, we will make boxes. We'll discuss that also कि चाहिए या नहीं चाहिए। Read the second point. Net amount received as winnings from horse races 21,000. Horse races ਦੇ ਅੰਦਰ TDS ਦਾ लिमिट ਕੀ ਸੀ? TDS ਦੇ टाइम 10,000। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 21। means TDS लगना या नहीं? कितना लगना? 30%. And this is net or gross? Net means we have to bring this to gross. How will you bring? Into 100 by 70, yes or no? Into 100 by 70 करके gross हो गया 30,000. Yes or no? Next one. Then third one is winning from camel race. Winning from camel race. Amount is 15,000. Now one more point. Winnings from camel race, no TDS. ठीक है, चार्ट ऐड करी जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, so winning from camel race also no TDS, so 15,000 will only come. Yes or no? Next point Raja. Winning from lottery, net is given 70,000. net no gross कितना करोगे? 100 by 70, so it will be 1 lakh. Yes or no? ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? cost of lottery ticket, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ lottery ਨਿਕਲੀ 1 lakh ਦੀ, ਉਸ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? 500. ਐਂਡ ਉਸ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? 1000.
ठीक है, ये डिडक्टेबल होगा या नहीं? लॉटरी कैजुअल इनकम से केस डिडक्शन इदा दी नहीं मिलती। लॉटरी चो सोचो, गवर्नमेंट कहती 500 की टिकट ली थी, 1 लाख का तेरा प्राइस निकल आया, ठीक है, तू कह रहे मेरा 500 की टिकट की कंपनसेशन हो, थोड़ी इडियट्स, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਸੀ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੁਝ, तो ਇੱਥੇ डिडक्शन नहीं ਦਿੰਦੇ, सो सिंपली ग्रॉसिंग अप करके 1 लाख ओके, एंड नीचे नोट की दोगे, cost of lottery ticket and commission paid to the lottery seller are not allowed as expenses out of the winnings from lottery, yes or no? Next one, next one, income tax refund, tell me, income tax refund, is it our income? No, it is our income in here, leave that. Next point, interest on income tax refund, interest on income tax refund, yes, interest is my income, so it will only be entered in the income from other sources, 1000. Next point, अमाउंट वॉन फ्रॉम टीवी प्रोग्राम कौन बनेगा ₹2 लाख, दिस इज नेट और ग्रॉस, टेल मी राजा ऑनलाइन ऑल्सो, दिस इज नेट और ग्रॉस, केबीसी, इट्स वॉन, अमाउंट वॉन, इन्ना जितया या इन्ना मिलया, जितया, दिस इज ग्रॉस, जिन्ना मिलया दैट इज नेट, रिसीव, ठीक है, सो दिस इज ग्रॉस, एज इट इज आ जाओगा या ग्रॉसिंग करनी है, एज इट इज आऊगा 2 लाख. नेक्स्ट वन, interest on 8% tax-free relief bonds issued by RBI. This also ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, interest on relief for 8% tax-free relief bonds of RBI is exempt. ठीक है, याद अगर वैसे सोचिए तो बहुत कुछ है करेंगे, will obviously we can't learn 50 or 100 names, है ना, जो क्वेश्चंस चाह रहे हैं that you need to remember, ठीक है, don't forget that बच्चा. Next one, on 1st October 2024, he subscribed, he purchased 1008% debentures of 100 each of Hexa Limited Company from open market at rupees 105. Date of interest are 30 June and 31st December every year. Purchase कब कितना? 1st October. 1008% debentures of 100 each. Face value total 1 lakh. Interest rate 8%. ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरेस्ट कितनी देर का मिलेगा? किस दिन मिलना? 30 जून एंड 31st दिसंबर. उसी कद परचेज कितना? 1st October. So when will you get the interest? 31st December. For how many months? इंटरेस्ट कितनी देर का मिलेगा? 6 months. कल डिस्कस किया सी, कंपनी आऊगी उन्हें जून च आके 6 months इंटरेस्ट दे देना, दिसंबर च आके 6 months इंटरेस्ट दे देना, तो 1 lakh into 8% into 6 by 12. Okay, yes or no? Next one, interest on 10% debentures. What's the point? On 1st October 24, he subscribed for 1010% debentures of 100 each of Pearl Limited, and the date of interest payment is 31st March every year. मतलब इस ए वाले केस कंपनी साल च एक बार इंटरेस्ट दिंदी या 2 बार? एक बार. एक बार मीन्स ईयरली. ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ? 12 months ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ. जब मर्जी परचेज किया, कंपनी विल कम ऑन 31st March and hand over you the interest for 1 year, whole year, yes or no? So कितना? 1000 into 100 face value 1 lakh, interest rate 10% for the whole year.
Clear? Yes or no? Next point. Interest received on Punjab government loan, rupees 20,000. So government no TDS. Okay, interest on Punjab government loan 20,000 gross as it is, no TDS. Next one. Interest received on 8% debentures of Fimox Limited unlisted company. Its word is received. Received. Matlab this is net. You have to gross up using how much TDS? 10% simply interest. Okay. So grossing up will be 100 by 90. That becomes 5,000. Okay. Yes or no? Next one. Gift from father. Gift from father. Father comes in the definition of relative. ठीक है relative the definition ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ points cover ਹੋ ਗਏ we'll discuss that ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ gifts are exempt but ਇਹਦਾ amount ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ point ਹੈ we'll discuss when we'll discuss the gifts full concept okay फिलहाल exempt लिखो ਇਹਦਾ नीचे rule discuss करांगे gifts का then we'll discuss कितने amount तक now family pension received 48,000 income है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ rule ਕੀ ਹੈ ਸੁਣੋ received is 48,000 you get a deduction of one third of pension family pension received or 15,000 whichever is less family pension becomes income from other sources you get a deduction of 15,000 or one third of the family pension whichever is less कितना आया less 15,000 so your taxable amount is 33,000 clear Raja so you have to learn some rules for the point for the this chapter also. Next is very easy. We have discussed already such a point. He lives in a rented house paying rent at 10,000 per month. He has sublet one third portion of the house on a rent of 4,500 per month. Municipal tax 6,000 repairs of the whole house 2,700 have been borne by him. First of all, what's your income? 4,500 per month. 4,500 per month means you multiply with 12. कोई डेट तक ही नहीं था फुल ईयर मानोगे minus how much have you spent for this first is the rent paid will be 10,000 into 12 because it was per month and into 1 by 3 1 by 3 is star okay then second one municipal tax will be 6,000 into 1 by 3 repairs will be 2,700 into 1 by 3 yes or no so your taxable amount comes to 11,001 the balance income from other sources is 4,39,100 and one more thing listen one thing more listen one more update is there the family pension rule has changed की चेंज हो गया हुनी सुन लो पिछले साल तक रूल की बोले हमें one third of family pension or 15,000 whichever is less now it's one third of family pension or 25,000 whichever is less one third of family pension or 25,000 whichever is less so now which is less 16,000 the taxable amount will become 32,000 so the answer will become 4,38,100
क्लियर, यस और नो? ठीक है, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹਲੇ ਨੋਟਸ ਕਿਤੇ ਰਹੋਗੇ, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट अवर इनकम, ਉਹਦਾ नोट जरूरी है। देन लॉटरी टिकट्स एंड ਉਹਦਾ कमीशन इज नॉट डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस। ठीक है, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ, this also you can note down, listen। interest from tax free relief bonds of RBI, it was exempt as per this question। and कुछ important मैं और लिखवाए सी, national defense bonds the interest, national plan certificate, special bearer bonds 1991, and कल ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ interest on capital investment bonds, yes or no? तो ये सारे की है exempt, so यदि इकट्ठी लिस्ट लिख लो, these interests are exempt, note it down। next चीज देखो राजा, your pension topic comes under the head salary, and your family pension topic comes under the head income from, tell me, other sources, yes or no? ठीक है, उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, short question। Mr. R held the following investments, first investment is rupees 90,000, 10% tax free debentures of a listed company where the rate of TDS was 10%, tell me, tax free लिखा, 90,000 is the face value, 10% is the interest rate, 90,000 10% becomes 9,000, TDS is 10%, but you will take the 9,000 in gross or net? Net, grossing up करोगे यदि तो 100 by 90, what will be the income? 10,000, you will show the income like 10,000, yes or no? Yes or no? And for the second part, 1 lakh 12% Punjab government loan, 1 lakh the 12%, simply 12,000, it's a gross income only, so 12,000, so total interest becomes both the parts 22,000। any doubt? Previous year ठीक है तो adjust कर लियो, that's okay, but answer is same, yes or no? What's your previous year? 24, 25, any doubt in this small question? Next देखो, question number 3। so what's written, calculate income from other sources from the following information, first is winning from lottery, winning is gross or net? Gross, so you'll use as it is 1 lakh, yes or no? The second one is amount received from the race winnings, received means it's gross or net? It's net, so you will gross up 35,000 into race winnings the कितना TDS 30%, so it will be 100 by 70, so it will become 50,000 by after grossing up, okay, yes or no? ठीक है, next one। Then there is the topic for gift received during the previous year 2024-25. Received rupees 20,000 as gift from his friend. Gift from his friend. ये तो taxable आऊगा 20,000 the gift। ये तो देखो gift from friend लिख ले 20,000, सुन लो पहला। We'll discuss about this point. The next one was received 1 lakh as gift from his elder brother. 1 lakh as gift from his elder brother. Elder brother comes in the definition of relative, so it's exempt। The next one is received rupees 1 lakh 40,000 as gift on his marriage। एक चीज समझ लो लाइफली, मैरिज करनी तुसी लाइफ कोई भी तेरे को एक्स्ट्रा पैसा पिया है which is unrecorded, by chance you are having cash but it's unrecorded, तुसी ਉਹਨੂੰ white money ਚ convert करना, you can use that, you can do that at the point of your marriage। जब ਤੁਹਾਡੀ मैरिज होगी ਤੁਹਾਡੇ को suppose 5 लाख रुपीस मान लो, 10 लाख रुपीस मान लो एक्स्ट्रा पे, 5 लाख मान लो पे,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ within a year from your marriage ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਆਇਆ ਸੀ not accept you getting that that's gift at the time of your marriage ठीक है once in a lifetime moment for converting your black money to white money without tax yes or no clear Raja so कितना 1,40,000 gift of gift at the time of marriage so exempt okay yes or no the next one received 80,000 rupees as gift from NRI friend on 1st January 2025 ये भी friend तो है next one another gift of 18,000 received from his friend सुन ध्यान ना सुनो friend तो gift आया पहला 20,000 दूसरा 80,000 थर्ड वन 18,000 तीन आगे everybody yes or no total कितना बनया total कितना बनया बोलो 1,18,000 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੋ गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर आ गया गिफ्ट फ्रॉम फादर आ गया एग्जाम्प्ट सी रिलेटिव ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जाम्प्ट सी और किसी तो भी गिफ्ट मिले द पर्सन इज नॉट योर रिलेटिव बट यू गॉट गिफ्ट फ्रॉम एनीवन एनी पर्सन ड्यूरिंग योर फाइनेंशियल ईयर यू गॉट गिफ्ट्स 50,000 तक वो भी मांग इतने कितना आ गया मींस अगर तुसी 45,000 ਦੇ गिफ्ट्स गए एग्जाम्प्ट है 48,000 एग्जाम्प्ट 50,000 एग्जाम्प्ट 51,000 पूरा टैक्सेबल आने की 50 माइनस कर दिस इज 1,18,000 द होल सम है ना इट्स मोर देन 50,000 सो फुली टैक्सेबल यस और नो 50,000 तक इन अ फाइनेंशियल ईयर योर गिफ्ट्स आर एक्सेप्ट यस और नो क्लियर ऑनलाइन क्लियर है जा so this is your income from other sources that is 2,68,000 without consideration ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਾ gift exempt है okay राजा yes or no execute your book contains so page number 248 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ given a meaning of relative listen very carefully relative ਦੇ point ਦੇ ਅੰਦਰ first person is ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ your spouse spouse is a gender neutral term means if you are a male your female partner and if you are a female your male partner simply husband or wife ठीक है so spouse is your first relative ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ second point is brother or sister of the individual ਤੁਹਾਡਾ brother ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ sister this is spouse ਤੁਹਾਡਾ brother ਤੁਹਾਡੀ sister ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ brother sister relatives ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜੀਨ ਦਊਗੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ next is the brother or sister of either of the parents of the individual parents of the individual means ਇਹਨਾਂ ਦੇ parents ਇਹਨਾਂ ਦੇ parents both ways point ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ brother or sister of either of the parents of the individual ਤੁਹਾਡੇ parents ਉਹਦੇ brother and sister next one any lineal ascendant or descendant of the individual
असेंडेंट और डिसेंडेंट ਤੁਹਾਡੇ ऊपर वाली पोस्ट नीचे वाली पोस्ट है ना, सक्सेसर प्रेडिसेसर दोनों आ गए। नेक्स्ट, एनी लीनियर और असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ दोनों पेरेंट्स ਨਾਲ कवर हो गए। then spouse of the persons referred to in clauses 2 to 6, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ spouses ਵੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ spouse ਵੀ ਨਾਲ। इसकी ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, this is you, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ spouse, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਏ, ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਦੈਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਰ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ और वो ਆਪਾਂ खुद थोड़ी अपने रिलेटिव, सिर्फ इस पर्सन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਪੜੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚ ਕਵਰ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ, ਯੈਸ অর नो? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਫਰਮ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੜਿਆ, so you should know ਕਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਫਟਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ, ਯੈਸ অর नो? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਯੂਰ ਸਪਾਊਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, पेरेंट्स दे ब्रदर सिस्टर मींस चाचा ताया सारे, देन सब दे स्पाउस, सिंपल, यस और नो? कोई डाउट, ऑनलाइन कोई डाउट बच्चा? तो आज तो बाद आ नहीं कहना कि पेरेंट्स आर नॉट रिलेटिव्स, as per income tax they are also covered under the definition of relatives, yes or no? तो कल तुसी ये डेफिनेशन एक बार पढ़ के आओगे, विल कवर द क्वेश्चन ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑल, ठीक है, चलो ओके बाय। देखो राजा गिफ्ट्स का कंसेप्ट देखो की आया, your page number 245, 245 ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਗਿਫਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਗਿਫਟ where any sum of money exceeding rupees 50,000 in aggregate, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਮ ਟੋਟਲ, ਤਿੰਨ ਗਿਫਟਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, so we are saying sum total means in aggregate, sum total of gifts if exceeding rupees 50,000, then in any previous year is received by any person without consideration, ਤਾਂ ਹੀ gift ਹੋਇਆ ਨਾ, so from any person or persons, किसी तो भी, the whole such sum of money shall be treated as income from other sources, means taxable or exempt, it is taxable under the head income from other sources, the whole amount will be taxable, ये भी चीज समझ लो। exceeding कितना बोलो 50,000, but the whole amount becomes taxable, if it's 48,000 then exempt, 49,000 exempt, 50,000 exempt, 50,000 1 rupee taxable, yes sir? अगर सारे तो 50,000 1 rupee का गिफ्ट मिले, बेटर टू कीप 1 rupee ब्लैक मनी, बाकी एग्जाम्प्ट करवा ली, you getting that, मतलब I'm speaking such thing to focus over the amount of 50,000, कि 50,000 तक exempt, 50,000 1 rupee भी हो गया टैक्सेबल हो जाना पूरा अमाउंट, क्योंकि अदरवाइज बच्चे के माइंड में 1 रुपया टैक्सेबल होएगा, नो 50,000 पे exempt नहीं होना, इस पॉइंट में फोकस कर लिए एग्जांपल क्या था, ठीक है, यस और नो? तो होल सम ऑफ मनी विल बी टैक्सेबल,
ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਫਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟ ਆਫ ਮਨੀ ਇੰਕਲੂਡਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੈਸ਼ ਗਿਫਟ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਨੀ ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼। It does not include only cash, but also gift by way of check, draft, fixed deposit, or NSC, National Saving Certificate. कोई ये भी चीज तो किसी ने गिफ्ट कर दी, that is also taxable. The second point, such sum of money must have been received without consideration. Gift नहीं कहोगे, without consideration. The third point, the aggregate amount of monetary gifts received during the previous year shall be considered. To see consider की करना, sum total means aggregate. Yes or no? Next point, such monetary gifts may be received from a person or from more than one person. एक पर्सन ने ही बार बार देते हैं या मल्टीपल पर्सन में देते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सम टोटल. एग्री? ठीक है, सब तो इंपॉर्टेंट तो आ गया. देन नेक्स्ट टू सी केड़ा एक्सेप्शन पड़ी है फ्रॉम रिलेटिव. इट्स, बोलो, exempt. Then third one, on occasion of marriage. बोलो, again exempt. बच्चा लिख दे ऑन ओकेजन ऑफ अपना बर्थडे, ये थोड़ी क्या कुछ, बर्थडे तो हर साल आना है. मैरिज क्यों कहता, बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम है ना, नॉर्मल. सो ਇੱਥੇ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂਗੇ. ਬਰਥਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਫਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਦੇ ਗਿਫਟਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਯਸ ਸਰ. ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਪਾ, वेरी इंपॉर्टेंट. ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्स पता की पा देते, यू गॉट सम गिफ्ट, कोई या पूरा अट्रैक्शन बच्चे का चेंज कर देना ऑन द थिंग, या कोई चीज इदा दी बोल दोगे आ चीज मिली, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख दोगे, तो बच्चे का फोकस शिफ्ट हो जाए थोड़ा. आगे जाके लिखोगे कि यू गॉट दिस गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी. ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ? ਮੈਰਿਜ ਦਾ. ਤਾਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, बर्थडे की कोई चीज नहीं पड़ी. आर यू गेटिंग दैट? और मैरिज ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, वेडिंग. ठीक है. तो अगर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸੋਚਨੇ ਹੋਣ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ, those all will be taken to this point. Are you getting that, yes or no?